सबसे पहले कराची से आपको अहम खबर देंगे। जेल चौरंगी के करीब सुपर स्टोर में आतिशज़दगी, आग सुपर स्टोर के बेसमेंट में लगी, बुझाने के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। कराची से आपको अहम खबर दे रहे हैं। जेल चौरंगी के करीब सुपर स्टोर में आतिशज़दगी से लाखों का सामान जलकर खाकस्तर हो गया है और बेसमेंट में यह आग लगी है, जिसे बुझाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और फायर ब्रिगेड का अमला वहां पर मौजूद है। मनाजिर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जो करीब के जो इलाका है उसे भी सील कर दिया गया है और यहाँ से धुआं उठता भी देखा जा सकता है। कराची का इलाका है और सूरत हाल इस वक्त वहाँ पर क्या है, कामरान मिन्हास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। कामरान, बताइएगा इमदादी कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जेल चौरंगी का इलाका है। यहाँ पर मशहूर जो है बहुत बड़ा सुपर स्टोर है, इसके बेसमेंट में जो है अचानक आग भड़क उठी है। काफी तादाद में लोग जो है यहाँ पर सामान लेने के लिए भी आए हुए थे। फौरी तौर पर सबसे पहले जो है उनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया गया है, उनको निकाला गया है और उसके अलावा यहाँ पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां जो है आग बुझाने की ठीक है कामरान, इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया। और इस वक्त आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्की में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। As a result of COVID and then this ongoing war and of course other difficulties, and as they say, when the going is tough, I have amended this quote, then the tough gets tougher. So I think this is what we should be doing today. We had a great get-together last night where we had very frank discussion, and obviously I'm not going to repeat what I said last night. Suffice it to say that we are here to convey this message to our Turkish brothers and sisters. President Tayyip Erdogan and his team, and to Turkish business community, that we genuinely and seriously want to work with you, not only to further strengthen our brotherly relations that has taken care of itself from centuries. What is very important at this point in time is to transform this brotherhood and fraternity into promoting our trade, investment and cultural relations. And it's not difficult. Even though we don't speak the same language, but we come from the same religion. Even if we don't understand Turkish or Urdu extensively, but we come from the same culture and we have shared history and we have been partner with each other, supporting each other through thick and thin. And it is a matter of record that in contemporary history I have received hundreds of Turkish businessmen from 2008 to 2018, and also your active participation in investments in Pakistan is highly appreciated. And above all, your contribution in humanitarian projects in Pakistan is very well known. I said this last night, and even at the cost of repetition, that the entire population of Pakistan witnessed your great efforts during earthquake, during floods, led by my brother, Excellency President Tayyip Erdogan himself and the First Lady.
Today, we are here to seriously engage ourselves with you because you are very serious-minded business people and your achievements are outstanding. It's a shining example for all of us. I wouldn't want to take more time because we are going to listen to you today. But let's do 3, 4, 5 things so that we are able to achieve our targets. Pakistan has a buoyant automotive industry, and yours is far superior, no doubt about it. But then it's a question of competition, and in order to promote our sales, not only between two countries, to third countries, let's collaborate and cooperate. For example, in your automobile industry, as I said, your quality is second to none. You are exporting to Europe, so those standards have to be met. But what we can do is, through mutual agreements, manufacture parts at lower cost, because your labor is very expensive. Ours is still comparatively cheaper. So we can have this wonderful win-win collaboration in this automobile industry. And then, of course, you produce your own grain and you are self-sufficient in wheat. We know that. But your textile industry is again, very strong. Pakistan textile industry is also, very rich in experience, and we have, great giants sitting here on the right side who are leaders of textile industry. So again, there can be, space and gaps to be filled by joint cooperation in textile, for example. Without going into details, this is again a win-win, collaboration between two brotherly countries. And then you are far ahead of Pakistan. In fact, you are one of the world's leading country in building dams, hydel power generation projects, and then renewable energy. We discussed Zulu last night. So your capacity to build dams and hydel power generation should be leveraged by us in Pakistan. So you will invest money, get profits, and we get cheap hydel power electricity. This is a great vision which we must, actualize through joint discussion and quick decision. Similarly, in renewable energy, we have great potential in Sindh, in Balochistan, in KP, and in Punjab. Like wind power generation, already Turkish companies, as I speak, we know, are already active in Pakistan, in Sindh, in Punjab. And let's promote this, solar energy and wind power for two reasons. A developing country like Pakistan cannot afford prohibitive bill of billions of dollars to finance our very expensive oil and gas and other related items. We cannot. So we have to replace our,
import of raw material by enlarging the scope of hydel power generation and renewable energy. And this is, a wonderful combination. Great investors are sitting here on my left, experts and experiences with you. Please come to Pakistan, and all our cascade from Deamir Bhasha down to Tarbela Dam and Mangla is full of potential of 40,000 megawatts. 40,000 megawatts. And this will have two wonderful impacts. That it will control flash flooding. It will definitely be very helpful, because once you have such floods, it is devastating, and we've seen in 2010. And two, exploit these great potential points and convert them into energy. So, how to go about? These are a matter of details. This late morning, I am just trying to, elaborate broad parameters of our future cooperation, which must be kick-started before I finish my humble, comments. And three, you will have profits, and we will have these great advantages, including, restricting desiltation process through this investments from north to south. So I think these are some broad areas where our cooperation can be very, very productive and profitable. Yesterday I met this young gentleman from Zulu. He is now bearded. I took some 20 seconds to recognize him, and so he's here. And they have been very keen. They have invested in wind power, and they were very keen to invest in solar. Finally, this moment has come, and all hurdles have been cleared. So what I'm saying is that these are milestones to be achieved. Only then will this have a semblance of reflection of our brotherly relations, which are very genuine. They're not artificial. A taxi driver here in Ankara or in Istanbul or in Lahore, in Karachi or Peshawar or Quetta, once he knows that a Turk brother is sitting in his taxi, he will say, I will not charge you, as they would not charge in Istanbul or in Ankara. Or when somebody is sipping coffee in a Turkish coffee shop, once he is known that he is from Pakistan, they will say, thank you, you are a brother, Kardesh. So I think this is what the spirit is all about. And it is not from today or yesterday, it is from centuries, my brothers and sisters. So I am here today with my great team, on left and right, and of course on this right side, on the left side, to convey this message to you in no uncertain terms, and absolutely, loud and clear, that I will be, along with my colleagues, we will be, welcoming you with both arms to come and invest in Pakistan, promote trade, and through innovative measures, through modern technology and modern skills. We have a very young population. 60% of our population, span from 15 years to 30 years, and it is a big challenge. But according to this Chinese time-tested quote, a challenge has always with it, opportunities. So, this young generation in Pakistan, boys and girls, we can, and I offer this, great, opportunity here, that let's train them with modern
skills and technology, IT-led technology, so that they are empowered, and then they become great, leaders of Pakistan. And today, I'm telling you that our neighboring country, India, their IT field exports something like $200 billion worth IT products, and ours is just $1.5 billion. It's a shame. So I think this is again a great opportunity for us to collaborate, and we have now a sizable base of IT knowledge in Pakistan, but this needs to be further multiplied manyfold. So this is again a great area of cooperation. Similarly, agriculture, dairy farming, I know a project is coming up in Lahore through joint venture. Mia Mancha, I think he's putting up a dairy farm with Turkish collaboration. So all this is very well, very good. But then it is not enough. Rather, it's very, it's insufficient and does not reflect our brotherly relations. So let's resolve today. I've requested my brother, Trade Minister, that before we conclude this meeting, we must sign a letter of intent that yes, through our untiring efforts, we shall achieve a bilateral trade figure of $5 billion in 2 years to come. Difficult, but not impossible. Nothing is impossible in this world, provided we have the will to do. Honorable Foreign Minister has reminded me of this visa issue, and I want to tell you, categorically that we will, inshallah, resolve this issue, and visa will not be an obstacle. Rather, we will have this visa turn into visa where we all earn and spend. So let's do this in a manner which is befitting and mutually beneficial. At the end, I'd like to quote Iqbal's part of his stanza, which is very relevant in this day and age for both of our countries. Jahane taza ki hai, afkare taza se namood. Jahane taza ki hai, afkare taza se namood. Ke sang o khish se hote nahi jahan paida. Ke sang o khish se hote nahi jahan paida. Ke modern societies, innovative world and progressive societies, prosperous societies are not built through building palatial buildings and houses. If palatial houses were to be the hallmark of modern societies, then let me confess and admit we have such fantastic buildings in Islamabad, in Lahore, in Karachi, in Quetta, and Peshawar. But that's not how modern societies are built. Iqbal says, "Ke sango khish se hote nahi jahan paida." Through marble and brick and mortar, you can't build modern societies. It is only through innovation, through modern techniques, through knowledge, through hard work, through untiring efforts, through sacrifice, which you have done and which we must do. And together we will, inshallah, achieve our position in the community of nations. Thank you very much. Allah bless you. And Turkey, Pakistan, Dosti, Zindabad. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अंकारा में पाक तुर्क बिजनेस काउंसिल की तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी दुनिया को कोरोना और रूस यूक्रेन जंग की मुश्किलात और असरात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता रात तुर्की के ताजरों से तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि तुर्क ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और अवामी राब्ते बढ़ाने के मौके मौजूद हैं। तुर्की के साथ तिजारती ताल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तुर्क
अवाम ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ताउन के मौके मौजूद हैं। इसके अलावा तवानाई के शोबे में भी दोनों ममालिक जो हैं वो ताउन कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि तुर्की के दौरे पर मौजूद हैं, अंकारा में पाक तुर्क बिजनेस काउंसिल की तकरीब से खिताब कर रहे थे और अपने खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी दुनिया को कोरोना और रूस यूक्रेन जंग की मुश्किलात और असरात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता रात तुर्की के ताजरों से भी बातचीत हुई है। तुर्क ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और अवामी राब्ते बढ़ाने की ज़रूरत है। तुर्की के साथ तिजारती ताल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तुर्क अवाम ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है। और एक बार फिर बात करेंगे कराची में पेश आए हादसे के हवाले से। जेल चौरंगी के करीब सुपर स्टोर में आग लग गई है और बेसमेंट में ये आग लगी है। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और आग से रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचने का खदशा है। करीबी इमारतों को खाली करवाया जा रहा है। आपको ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं। कराची का इलाका है जेल चौरंगी और इसके करीब जो सुपर स्टोर वाक़ है उसके बेसमेंट में आग लग गई है। फौरी तौर पर यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है, लेकिन साथ ही जो रिहायशी इमारत है वहाँ तक भी ये आग फैल सकती है। आग के धुएं के बादल उठते हुए दिखाई दे सकते हैं और साथ साथ यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसका सिलसिला भी जारी है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें फौरी तौर पर यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। हमारे नुमाइंदे कामरान मिन्हास हमें बताएंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। जी कामरान। जी बिल्कुल, ये बेसमेंट है एक मशहूर जो है सुपर स्टोर, वहाँ पर ये आग लगी थी। इस वक्त यहाँ पर जो है सिंध रेंजर्स के जवान, पुलिस के जवान, उसके अलावा ये 8 गाड़ियां जो है यहाँ पर इस वक्त आग बुझाने की कोशिशें कर रही है। ज्यादा यहाँ पर फैल गया है। एक शख्स जो है दम घुटने से जो है यहाँ पर बेहोश भी हुआ है, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है और लोगों की यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद मौजूद थी, उन्हें जो है रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। अभी भी कुछ लोग अंदर मौजूद है। रेस्क्यू जराए यही कह रहे हैं कि जो लोग अंदर मौजूद है वो देर बाद जो है मुकम्मल तौर पर बाहर निकाल लिया जाएगा, जबकि आग बुझाने की भी कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड के अमले का कहना यह है कि ये तीसरे दर्जे की आग है और आग पर जल्द से जल्द काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और उसके अलावा मुमकिन तौर पर अगर आग जल्द से जल्द काबू में नहीं आती तो कराची के जो दीगर स्टेशन है फायर ब्रिगेड के, वहां से भी जो है गाड़ियां तलब की जा सकती है। उसके अलावा यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद है। इमरजेंसी जो है नाफिज कर दी गई है। जो हाइड्रेंट पंप है उनको भी जो है अलर्ट कर दिया गया है कि पानी की किसी किस्म की कमी ना हो, क्योंकि एक बड़ा सुपर स्टोर है और यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है एशिया खरदोश है, जो है बहुत ज्यादा आग लग सकती है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा एहतियात से काम लिया जा रहा है। अभी आपको खबर दें कि इमरान खान के खिलाफ बनने वाले फितरी इत्तेहाद में इख्तिलाफात सर उठाने लगे हैं। चेयरमैन नैब की तैनाती का मामला गले की हड्डी बन गया। आसिफ जरदारी जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर अड़ गए। नून लीग के पेश करदा नाम मुस्तरद कर दिए गए। किसी दूसरे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का नाम देने से भी इनकार कर दिया गया है, जबकि साफ कह दिया दूसरी जानिब नून लीग रिटायर्ड जज को चेयरमैन लगाना नहीं चाहती। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज भी नून लीग के हम आवाज बन गए। जरदारी फिर भारी पड़ गए। हुक्मरान इत्तेहाद में जूतों में ताल बटने लगी। न बशीर मेमन न फवाद हसन फवाद चेयरमैन नैब होंगे तो बस जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर। आसिफ जरदारी ने मैं न मानूं की रेट लगा ली। चेयरमैन नैब का मामला दो बड़े इत्तेहादियों की दूरियां बढ़ाने लगा। सरा के मुताबिक पीपल्स पार्टी को नून लीग के पेश करता नाम कबूल नहीं। नून लीग ने मकबूल बाकर के नाम पर सॉरी कह दिया। नाम निहात अपोजिशन लीडर राजा रियाज भी मुस्लिम लीग नून के हम आवाज बन गए। सरा के मुताबिक नून लीग का मौक़िफ़ है रिटायर्ड जजेस को चेयरमैन लगाने के असरात भुगत चुके हैं। आसिफ जरदारी किसी अच्छी शोहरत के हामिल ब्यूरोक्रेट का नाम दे। दूसरी जानिब साबिक सदर कहते हैं मकबूल बाकर जैसा खैर मुतनासा कोई नहीं हो सकता। सराय का कहना है कि यही इख्तलाफात राजा रियाज और शहबाज शरीफ की मुलाकात में रुकावट हैं। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर से मज़ीद नाम देने का कह दिया। वज़ीर कानून आसम तारड़ को भी मज़ीद और मौसूल शख्सियात की तलाश का टास्क दे दिया। इलेक्शन कमीशन का बड़ा यू टर्न, आम इंतखाबात के लिए तैयारी मुकम्मल होने का इंदिया दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं हल्का बंदियों पर तेजी से काम जारी है। इलेक्शन का फैसला हुकूमत ने करना है, जब कहा जाएगा करा देंगे। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक फैसले करता है। हमारे फैसलों से कोई नाराज या राजी होता है ये उनका मसला है। फैसले बिला खौफ करते रहेंगे। कासिम सूरी ने PTI अरकान के इस्तीफों का केस नहीं भिजवाया। इलेक्शन कमीशन का बड़ा यू टर्न, तैयारी के लिए 7 माह का बयानिया एक पल में तब्दील।
आम इंतखाबात के लिए रेडी होने का सिग्नल दे दिया। नए अरकान की तकरीब हल्फबरदारी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अंदाज बदला बदला था। दावा किया इलेक्शन कमीशन अपने फैसले बिला खौफ करता है और करता रहेगा। कोई नाराज या राजी होता है ये उनका मसला नहीं। सिकंदर सुल्तान राजा बोले नए इंतखाबात का फैसला हुकूमत ने करना है, जब कहा जाएगा करा दिए जाएंगे। हल्का बंदियों पर तेजी से काम जारी है। इलेक्शन कमीशन का काम साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात का इनेकाद है। उन्होंने कहा कासिम सूरी ने PTI अरकान के इस्तीफे का केस नहीं भिजवाया। फॉरेन फंडिंग पर समाज जारी है। फरीकैन को सफाई का मौका देना जरूरी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तकरीब में नए मेंबरान से हल्फ लिया। पंजाब से बाहर हसन भवाना और खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह शामिल हुए। नए मेंबरान की तकर्रुर से इलेक्शन कमीशन की तश्कील मुकम्मल हो गई। और अब बात करेंगे महंगाई की। महंगाई के खात्मे का नारा लेकर आने वाली शहबाज सरकार का हर इकदाम अवाम को तकलीफ पहुंचाने लगा है। पुराने पाकिस्तान में गरीब का जीना मुहाल हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने सब्सिडी में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहबाज सरकार का अवाम दुश्मन खेल। घी पर सब्सिडी में कमी, महंगा कर दिया तेल। रिलीफ का लॉलीपॉप लेकर आने वालों का हर इक़दाम तकलीफ बढ़ाने लगा। गिरानी से परेशान अवाम को महंगाई के खौलते तेल में तल दिया। पुराने पाकिस्तान में यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई राज करने लगी। घी और तेल की कीमत ओपन मार्केट के बराबर हो गई। कुकिंग ऑयल की कीमत में यकदम 215 रुपए इजाफा। नई कीमत 605 रुपए मुकर्रर कर दी गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी भी 208 रुपए महंगा हो गया। 1 किलो घी लेना है तो 555 रुपए देने होंगे। जालिमाना फैसले से अवाम बिलबिला उठे। शहरी कहते हैं हुकूमत कुछ तो रहम करे, रिलीफ नहीं दे सकती तो कम से कम तकलीफ ना दे। और महंगाई में जालिमाना इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहते हैं जिंदगी की गाड़ी चलाना मजीद मुश्किल हो जाएगा। 30,000 मेरी ग्रॉस है, उसमें से मैंने ये सोचना है कि मैंने घर का रेंट देना है, मैंने बाकी चीजें करनी है, मैंने कैसे सब कुछ मैनेज करना है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। पेट्रोल ने तो साडा लाख ही तोड़ता वा। असी की करिए, किधर नु जाइए। असी हुकूमत तो बहुत तंग है, काम है नहीं है। महंगाई इतनी ज्यादा है कि जब शाम को 1,000 रुपए की मजदूरी करके आता है, वो एक थैला आटे का लेके आता तो 1 पहिया चीनी आती है, उसके साथ और कुछ नहीं आता। बच्चों को खाने को क्या देगा? ये गवर्नमेंट को चाहिए खुदा का खौफ करे, अपना माल इकट्ठा करके अपने केस ना खत्म करवाए। महंगाई रुकने वाली तो नहीं है। महंगाई तो हर तेल के साथ और चीज़ों के साथ कनेक्ट है। आटा बहुत महंगा हो गया है, घी बहुत महंगा हो गया है, हर चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। हुकूमत खुद गर्ज है, मफाद परस्त है, उसको अपने मफाद से गर्ज है, उसको आवाम से कोई गर्ज नहीं। महंगाई पे महंगाई, एक घर में कमाने वाला 10 खाने वाले, बहुत परेशान है। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। घी की कीमत 208 रुपये इजाफे से 555, जबकि ऑयल 215 रुपये इजाफे से 605 रुपये फ़ी किलो हो गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील बताएगा क्या कीमतें हैं घी और तेल की? जी देखिए, महंगाई का जो तूफान है वो किसी तरह थमने का नाम नहीं ले रहा है और 11 अप्रैल 2022 से अब तक ना सिर्फ बिजली, अशियाए खुर्दोनोश की तमाम चीज़ें जो हैं उनकी प्राइसेस में डबल होती जा रही हैं। कल हुकूमत ने एक और कारनामा अंजाम दिया है। जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ घी और तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। घी में तकरीबन 213 रुपये और तेल के अंदर जो है वो 208 रुपये। यहाँ के इंचार्ज स्टोर के मुझसे बात करेंगे। सर ये बताइएगा कौन कौन से घी तेल में इजाफा कर दिया गया है और कितना इजाफा कर दिया गया? यहाँ मौजूद हैं इस वक्त, क्या सुनते हैं? हमारे पास डालडा घी है और डालडा तेल है ना। डालडा तेल में भी कोई इजाफा नहीं हुआ और डालडा घी में भी कोई इजाफा नहीं हुआ। हमारे पास फ़िलहाल तो यही हैं 2 आइटम। तो ये जो तेल हैं जिन पर सब्सिडी दी जाती है, ये कौन कौन से उनके प्राइस में इजाफा करती है? नहीं, तेल में कोई सब्सिडी नहीं दी जाती। नहीं, जो छोटे ब्रांड्स हैं जिसमें घी और तेल हैं, जिसमें ओनली उसमें घी होता है सिर्फ। हाँ, वो 200 भी आएगा तो नए रेट पे वो उस पर शायद इजाफा हो गया हो। लेकिन ये डालडा घी, दूसरे ब्रांडेड घी हैं, हबीब है, डालडा है, सोया सुप्रीम है, इन पे इजाफा नहीं हुआ अभी तक। अगर आप यहाँ रेट देखना चाहें तो मैं आपको बता दूँ कि डालडा जो इस वक्त 5 किलो का है वो 2,365 रुपये का है। और इसी तरह अगर तेल की बात कर लें यहाँ तो ये 2,415 रुपये का जो है वो ये प्राइस है। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। आवाम को कोई लम्हा या कोई ऐसा बहुत शुक्रिया कफील अहमद अपडेट कर रहे हैं। और अब रुख करेंगे लाहौर का। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और ऑयल की कीमतों में इजाफा। महंगाई से सताई अवाम की परेशानियां मजीद बढ़ गईं। यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता घी और दालें भी गायब हो गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे सुधीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुधीर, बताइएगा।
जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर जैसे सस्ते स्टोर महंगे स्टोर बन चुके हैं। घी की कीमत जो है वो बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। हुकूमती नोटिफिकेशन के बाद आज घी की कीमत 560 रुपये फ़ी किलोग्राम तक पहुंच चुकी है, जबकि जो ऑयल है जो कि यूटिलिटी स्टोर पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के फ़रोख्त हो रहे हैं, उनकी कीमत भी 590 रुपये से लेकर 610 रुपये तक पहुँच चुकी है। लोग इस वजह से बड़े परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि शदीद गर्मी में लोड शेडिंग के दौरान इस वक्त यूटिलिटी स्टोर के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं। लोग यहाँ पर इसलिए आते हैं कि सामान मिलेगा और सस्ती अशिया जो हैं यहाँ पर मिलेंगी, लेकिन सूरत हाल इससे बिल्कुल बरक्स होती जा रही है और ये स्टोर जो हैं वो आवाम के लिए महंगे होते जा रहे हैं। मैं सुबह कोई 9:30 बजे का आया हूँ इधर और आज 355 है, तो कुछ भी समझ नहीं आ रही भाई। महंगाई तो इसका तरह है, खैर आम आदमी के लिए भाई कुछ भी नहीं है। अब क्या करे, गरीब खाए या पिए, कुछ गरीब खाए या क्या करे, आप क्या करें? सर जी घी है ही नहीं, खाली लिस्ट लगा हुआ है 305। घी स्टॉल पर यहाँ पर मौजूद नहीं है और लोग देखिए एक लंबी लाइन जो है वो यहाँ पर लगी है। सुधीर, लाहौर से आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब फैसलाबाद का रुख करेंगे, वहाँ महंगाई की क्या सूरत हाल है, जी तनवीर से जान लेते हैं। जी तनवीर। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल की होशरबा कीमतों के बाद ये कहा जा सकता है कि अब घी निकलेगा टेढ़ी उंगली के साथ और कनस्तर के साथ रोटी लगाकर ही खाई जा सकती है। अदरवाइज तो रेट जिस जगह पर जा चुके हैं, आ चुके हैं, उस सतह पर आम आदमी खरीद ही नहीं पाएगा। ये एक आम दुकानदार से पूछते हैं कि दुकान पर रेट इस वक्त जो है वो क्या है। अब हमें 520 रुपये पर केजी पड़ रहा है, तो हम सेल क्या करेंगे? जो उधर दुकान पर 520 रुपये हमें पड़ रहा है। और उसके बाद कुकिंग ऑयल का क्या रेट? कुकिंग ऑयल का तकरीबन 10 रुपये या 20 रुपये इससे इजाफा ज़्यादा होगा, 530 या 40 रुपये। आप क्या कहेंगे, अगर इसी तरह से कीमतें बढ़ती रही तो क्या बनेगा? या मैं तो ये कहता हूँ कि ये जिस तरह कीमतें बढ़ रही हैं, गरीब आदमी के लिए घी खरीदना बहुत मुश्किल हो गया। अब कितने पराठे रोज के खाएंगे? 4 खाएंगे अभी भी? ले जी, ये साहब अभी भी 4 खाएंगे। उनकी तरफ से महंगाई चाहे जितनी मर्जी हो जाए, लेकिन वो जो है वो इस्तेदाद उसे बरूए कार लाते रहेंगे। ये कहा जा सकता है कि घी की रिकॉर्ड कीमतें जो हैं वो इजाफा। बहुत शुक्रिया, फैसलाबाद से आप हमें अपडेट कर रहे थे। आम खबर दें आपको, असद कैसर का गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की फहरिस्त फराहम करने की इस्तदा कर दी गई। लॉन्ग मार्च में शरीक होने पर मुकदमात दर्ज हुए। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया है, मेरे खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात गैर कानूनी हैं। पुलिस FIA को गिरफ्तारी से रोका जाए, दरख्वास्त में यह इस्तदा की गई है। सेक्रेटरी दाखिला IG इस्लामाबाद, IG पंजाब को फरीक बनाया गया है। तफसीलात जान लेते हैं फयाज महमूद से। फयाज, बताइएगा तफसीलात। जी, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रजू कर लिया है और मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की फहरिस्त फराहम करने की इस्तदा कर दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुकदमात की फहरिस्त मिलने तक असद कैसर की गिरफ्तारी से रोका जाए। दरखास्त में कहा गया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कॉल पर लॉन्ग मार्च में शरीक हुआ, जिस पर मुल्क भर के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज किए गए। इतलात के मुताबिक मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस और FIA ने मुकदमात दर्ज किए हैं। मेरे खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात इंक्वायरी की तफसीलात की जाए। असद कैसर ने यह भी कहा है कि मेरे खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात गैर कानूनी है, पुलिस और गिरफ्तारी से रोका जाए। दरखास्त में सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद, IG पंजाब पुलिस, IG सिंध पुलिस, IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और DG FIA को फरीक बुलाया गया है। जी, असद कैसर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। बहुत शुक्रिया फयाज, आपने इस हवाले से अपडेट किया। अहम खबर देंगे आपको, विफाकी बजट साल 2022-23 हुकूमत को मुश्किल मुआशी हालात का सामना। आइंदा माली साल मुख्तलिफ वजारतों के लिए तरक्याती फंड्स में कमी करने का इम्कान है। विफाकी बजट साल 2022-23 में तरक्याती बजट का हजम भी कम किया जाएगा। तरक्याती बजट 700 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे उमर हयात हमारे साथ मौजूद है। जी उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, रवा माली साल जो है वो हुकूमत ने जो वफाकी तरक्याती बजट था उसका हजम 900 अरब रुपए रखा था, लेकिन अब तक उस पर जो है वो 480 अरब रुपए के अखराजात हुए हैं और आइंदा माली साल के जो वफाकी मीज़ानिये 2022-23 में तरक्याती बजट का हजम कम करके 700 अरब रुपए जो है वो रखे जाने का इम्कान है। और तरक्याती बजट जो है वो आइंदा माली साल रवा माली साल के मुकाबले में 22% कम होगा। आइंदा माली साल पावर डिवीजन के लिए
लिए 50 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज है और NHA के लिए आइंदा बजट में 120 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज है। आइंदा माली साल में वो रवां साल के बजट के मुकाबले में 6 अरब रुपए कम होगा। जमशुदा अजला की तरक्याती स्कीमों के लिए 40 अरब रुपए रखे गए हैं। जमशुदा अजला के लिए रवां माली साल के मुकाबले में 14 अरब रुपए की अगले माली साल के तरक्याती बजट में कमी होगी और हायर एजुकेशन कमीशन के आइंदा माली साल के लिए जो है वो 30 अरब रुपए तरक्याती बजट के तौर पर रखने की तजवीज सामने आई है और हायर एजुकेशन कमीशन के लिए आइंदा बजट में इजाफे का इम्कान है। वज़ीर आज़म की जानिब से HEC के लिए बजट में कटौती न करने की हिदायत की गई है। तजावीज़ को हतमी मंजूरी और मजीद जायजे के लिए कमेटी में पेश किया जाएगा और प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 4 जून को तलब किया गया है। जी अच्छा उमर, ये भी बताइएगा, आपने बताया बराह रास्त जो है आवाम पर किस तरह का बोझ पड़ेगा अगले बजट में? देखिए, आवाम पर जो है क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत के हमें फैसले नजर आ रहे हैं और उन फैसलों के हवाले से अगर देखा जाए तो महंगाई में जो है वो बड़े पैमाने पर इजाफा हो रहा है। हुकूमत की जानिब से महंगाई के जो एजाद शुमार दिए जा रहे हैं और जो इस वक्त मार्केट के हवाले से अगर देखा जाए तो मार्केट में इस हवाले से सिचुएशन काफी। बहुत शुक्रिया उमर हयात अपडेट करने के लिए। एक और अहम खबर है, लंपी वायरस भारत से पाकिस्तान मुंतकिल हुआ। महकमे लाइव स्टॉक ने यह बड़ा इंकशाफ कर दिया है। मवेशियों में पाए जाने वाला वायरस भारतीय लंपी वायरस से मुशाबहत रखता है। पंजाब में लंपी वायरस के हमले जारी हैं। 3100 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि ये केसेस अटक, चकवाल, मियांवाली, रहीम यार खान, बहावलपुर में रिपोर्ट हुए हैं। महकमे लाइव स्टॉक की जानिब से बताया जा रहा है कि पंजाब में 3 लाख से ज्यादा मवेशियों को वैक्सीन लग चुकी है। सिंध से मुतसिल सरहदी अजला में बीमारी से ज्यादा मवेशी मुतासिर हुए। लंपी वायरस मच्छरों, मक्खियों और दीगर उड़ने वाले कीड़ों से फैल रहा है, ये भी बताया जा रहा है। आपको आगाह कर रहे हैं, लंपी वायरस भारत से पाकिस्तान मुंतकिल हुआ है। सुधीर चौधरी से इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सुधीर, महकमा लाइव स्टॉक ने मजीद क्या बताया इस बारे में? महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से ये बड़ा इंकशाफ सामने आया है कि लंपी वायरस भारत से पाकिस्तान मुंतकिल हुआ है और अब तक 3100 से ज़ायद इस तरह के केसेस मज़ीद भी सामने आ चुके हैं और ना सिर्फ पंजाब बल्कि सिंध में भी ये केसेस सामने आए हैं। सुधीर चौधरी, बताइएगा मज़ीद। लंपी वायरस के हवाले से महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से बड़ा इंकशाफ किया गया है कि ये बीमारी भारत से पाकिस्तान मुंतकिल हुई है। एक और अहम खबर है, कम उम्री में शादी से मुतालिक केस में दरख्वास्त जमानत की समाअत। SP इन्वेस्टिगेशन, SHO क्लिफ्टन और 3 तफ्तीशी अफसरान कल तलब कर लिए गए हैं। IG सिंध को 5 पुलिस अफसरान की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। सरकारी वकील तमाम अफसरान की 2 जून को हाजिरी यकीनी बनाए। अदालत की जानिब से कहा गया है अफसरान पेश न हुए तो नाकाबिल जमानत वारंट जारी करेंगे। मुलजिम इर्तिजा ने सेशन अदालत के ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। सेशन जज ने 7 अप्रैल को मुलजिम की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी थी। और अब आपको बताएं, पुलिस की नाअहली, जराइम पेशा अफराद बेकाबू। पुलिस ने राह चलते शहरी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। बफर जोन में मुबैना पुलिस मुकाबले में बुजुर्ग शहरी जहांगीर की हलाकत पुलिस ने तस्दीक कर दी। DIG नासिर आफ्ताब की जानिब से इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। और लोड शेडिंग की बात करें तो शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग से अवाम बिलबिला उठे। हुकूमत को बेहिस करार देते हुए रहम की अपील कर दी। होती नहीं है सारा दिन, बच्चे गर्मी से परेशान है, गर्मी में मारे परेशान, ना पानी होता है। ये नई जो इम्पोर्टेड कार आई है इससे तो बहुत परेशान है हम। कल 1 घंटा आती है, 1 घंटा चली जाती है, कभी दिन के टाइम कभी रात के टाइम। जो उम्मीद थी उससे बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि पहले तकरीबन कोई 1 घंटा की या 20 मिनट की लोड शेडिंग होती थी, अभी तो 6-6, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। हर 1 घंटे के बाद 1 घंटा लाइट जा रही है, जिससे कारोबार भी तबाह हो चुके हैं इस वक्त। ओवरऑल जो सोशल इकोनॉमिकल जो हालात हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, उसके साथ साथ अगर बिजली बंद होगी तो फिर उसके साथ आवाम के ऊपर और ज्यादा एक अजियत नाज़िल हो जाएगी। लोड शेडिंग जी अगे ना बहुत ज्यादा हो रही है, कारोबार तबाह हो गया हुआ जो है ना, बिजली भी महंगी कर दी है, उसके बावजूद बलूचिस्तान को बिजली नहीं दी जा रही। लोड शेडिंग की वजह से लोगों का जिंदगी अजाब बन चुका है। सबसे ज्यादा लोड शेडिंग है, उसके लिए कुछ सोचा जाए। बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे हैं, घरों में बीमार लोग, उनका गुजारा नहीं हो रहा है। सुबह के टाइम भी 6 से 8 बिजली चली जाती है जब बच्चों ने स्कूल जाना है, शाम को भी फिर 5 से 8 बिजली नहीं है।
और अब जिक्र मौसम का। मुल्क भर में मौसम के उतार चढ़ाव, कहीं धूप का राज तो कहीं मौसम खुशगवार। मैदानी इलाकों में सूरज आग बगुला, वहीं बालाई इलाकों में बादल जमकर बरसे। रात गए इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के मुतादिद इलाकों में बारिश जमकर बरसी। कहीं गर्म तो कहीं मौसम ठंडा ठार, कहीं बादल तो कहीं सूरज का राज। रात गए इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खित्ता पोटोहार में चंद मुकामात पर आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश इस्लामाबाद में 15, चकवाल में 9, जहलम 5, अटक 4, मरी 3, मालब जब्बा 4, बालाकोट 3, पगरोड बाबूसर 5, गिलगित 1, मुजफ्फराबाद 3 और रावलाकोट में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।